Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I wish you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class. There is an English for grade 4. We are learning unit number 15 and its title is The Safety of Children. So yes, my dear teachers, I have divided this lesson according to this lesson plan and according to this lecture. If you feel easy, so you can follow it. If you don't feel easy, so you can change it as you want. Okay, so I am going to tell you that how I have divided these lectures. Lecture number 1, under the title of grammar, we will learn about simple future tense and we will cover up page 119, and its SLO will be use future simple tense for expressing actions in future. And our lecture number 2 will be use of be, do, have in positive and negative forms, and we will cover up page number 120. And yes, my dear teachers, its SLO will be illustrate the use of different positive and negative forms of be, do and have with their corresponding pronouns I, we, you, he, she, it and they. And our next lecture, lecture number 3, under the reading comprehension, title of comprehension, we will learn how to read, and we will cover up page 115 and half page 116. And its student learning outcome will be read silently for comprehension. And the next lecture, lecture number 4, also is comprehension skills, and we will cover up page number 16 and 17. And its SLO will be apply while reading strategies to interact with text, follow instructions in maps, short public notices and signs, copy and take dictation of words studied in class. And the next, my dear teacher, lecture number 5, we will learn about critical thinking in question number 4, page number 118. And its SLO will be recognize and use more action verbs from extended environment, including other subjects in speech and writing. Lecture number 6, under the title of reading, we will learn about maps and public signs, and we will cover up page number 121 and 122. So my dear teachers, its SLO will be apply while reading strategies to interact with the text, to follow instructions in maps, short public notices and signs. And our next lecture, lecture number 7, under the title of listening and speaking, we will cover up page 121 and question number 7. And its SLO will be demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to practice and use appropriate tone and non-verbal cues of different communicative functions. So our last lecture, lecture number 8, expository writing. We will learn how to write an expository paragraph on page number 123. So my dear teachers, I have divided all these lectures and according to these SLOs. Okay, so now you can see that. Now we are going to start. And its SLO will be use words such as first, second, next and then to show a sequence. Use appropriate vocabulary and sentence to write a simple paragraph by writing an expository paragraph explaining a process or a procedure. So this is the way that how we have to change all these. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Al-Quran, see there, say if the whole of mankind and jinns gathered together to make out a book like this, Holy Quran, they could not do it even. So my dear teachers and my dear students, this beautiful verse was telling us about the importance of Holy Quran, that Allah Almighty gives challenge to all jinns and also human beings, that if whole mankind, if they will be gathered together and they will try to make a verse like this, that they will be unable, okay, they can't reach to this, that they should make a single verse from the Holy Quran. Okay, this is the big book of Almighty Allah and it's also under his protection. Okay, even we cannot change a single word from this book. Okay, this is a clear challenge that Holy Quran is a pious book and it is sent by Almighty Allah. Just he has power to make such type of books for our guidance. Okay, my dear students. So open your book, my dear students. Page number 115, unit 15, the safety of children. So we are going to start our lecture. So open. So have you opened? Good job. And its theme is health and safety. Its sub-theme, related theme, avoid befriending strangers.
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, मीन्स सेहत और हिफाजत। हम ये दो चीजें कैसे लेके आगे चल सकते हैं, और इसको रिलेट करने के लिए इसका सब थीम क्या है? अवॉइड befriending स्ट्रेंजर्स, कि अजनबियों से, अजनबी कौन होती है? जिन्हें हम नहीं जानते, उनसे फ्रेंडशिप करने से और बातचीत करने से अवॉइड करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं हम बेटा। A stranger is a person you have never met before or you do not know. Sometimes it seems an attractive idea for children to talk to a stranger. There are some rules that you should know about strangers. Okay? Stranger कौन होता है? अजनबी कौन होता है? Is a person who have never met before or you do not know. Stranger वो होते हैं जिससे हम पहले कभी नहीं मिले या हम जिसे नहीं जानते। ओके, मीन्स हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंड्स में या हमारी कम्युनिटी में जहाँ इर्द गिर्द हमारे नेबर्स हैं, उनमें वो लोग शामिल नहीं होते, स्ट्रेंजर्स जिनको हमने पहले कभी ना देखा हो। तो बेटा वो लोग अजनबियों में आते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमने उनसे कैसे बच के रहना है। समटाइम्स इट सीम्स अट्रैक्टिव, और कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि हम अगर अपने माँ बाप के साथ हैं, कोई ऐसा अजनबी होता है जो अट्रैक्टिव लगता है कि हमारा दिल करता है कि हम जाएं, उससे बात करें। तो उससे बात किस वक्त करनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। When you are out with elders, it is good to sit calm and talk to the people you do not know, since the elders are there to monitor the situation and protect you. तो हमें कब बात करनी चाहिए? अगर हम अपने बड़ों के साथ बाहर गए हुए हैं और हमें नजर आता है कि कोई स्ट्रेंजर अजनबी है, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो हम उन्हें सलाम कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन किस सिचुएशन में कर सकते हैं? जब हम अपने बड़ों के साथ हों, किसी बड़े बहन के साथ, भाई के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, तब हम उनसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, वो हमें देख रहे होते हैं और स्ट्रेंजर की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी जज कर रहे होते हैं। तो हम, इट मीन्स हम प्रोटेक्शन में होते हैं तब, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पे आए, फॉर चिल्ड्रन इट इज नेसेसरी टू नो दैट इफ अ स्ट्रेंजर इवन अप्रोचेज एंड ऑफर्स अ राइड or gives gifts like sweets or toys, they should step away and firmly shout no. ओके, यहाँ क्या बताया जा रहा है? समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप पैदल जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, तो अजनबी क्या करते हैं कि आए, हम आपको छोड़ के आए, राइड आपको कहते हैं कि बाइक पे या गाड़ी पे या किसी भी राइड पे हम आपको आगे आपके घर तक छोड़ के आए। और अगर आपके साथ ऐसा कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा कोई भी मामला आए, तो आपने सख्ती से मना कर देना है कि नहीं, हमने नहीं जाना। वो क्यों आपको ऑफर कर रहा है? एक अजनबी बंदा जिसे आप जानते नहीं हो, तो डेफिनेटली उसके कोई कंसर्न्स होंगे डेफिनेटली, और वो कंसर्न्स अच्छे नहीं होंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है कि हमने इन लोगों से बच के रहना है। नेक्स्ट पेज ओपन करें माय डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 116, एंड फर्स्ट लाइन इज देयर, लीव द स्पॉट इंस्टेंटली, चिल्ड्रन शुड टेल देयर एल्डर्स और अदर reliable mature person like teachers or guards about the situation. ओके, वहां से आपने फौरन वो जगह छोड़ देनी है जहां आपको किसी ने स्वीट्स देने की, गिफ्ट्स देने की कोशिश की और जिसने आपको कहा कि मैं आपको छोड़ के आता हूं, तो आपने फौरन वो जगह छोड़नी है और इस चीज का जाके फौरन अपने पेरेंट्स को बताना है। बेटा कभी भी अपनी बातें जो है ना अपने पेरेंट्स से नहीं छुपानी है। ओके, अगर कुछ भी हुआ है, आपकी सारी डेली रूटीन जो आपने स्कूल में हुआ, आप कहीं गए, वहां हुआ, वो अपने पेरेंट्स से मस्ट शेयर किया करें। इसके बहुत फायदे होते हैं, और सबसे पहला फ्रेंड आपका अपना पेरेंट्स हैं। ओके, so what should children do if they are alone and need someone's help? They should try to look for a person in uniform like a police officer, security guard or a traffic warden. If they are not around, elderly people or women can also help. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि अगर आप अकेले हो और आपको किसी की मदद की जरूरत है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने इर्द गिर्द देखना है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी हो जो आपको क्या कर सके, सिक्योर कर सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली कोई तो होगी, इवन कोई वुमेन भी हो, कोई औरत भी आपको नजर आ रही है, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि आप किसी अजनबी से क्यों खौफजदा हैं और वो आपको क्या ऑफर कर रहा है। ओके, तो इन चीजों को माइंड में रख लें कि आपने किसी अजनबी को देख के, सपोज आपको उसकी हरकतें मशकूक लगती हैं, आपको डाउट होता है कि ये अजनबी कुछ करने वाला है, तो डेफिनेटली आपने अपना वो शक शेयर करना है। ओके, गौर से सुने, ये सारी आपके लिए है क्योंकि बाहर भी जाना पड़ जाता है समटाइम, तो हमने केयर करनी है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आए, सेफ्टी जोन्स आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो इमीडिएटली फॉर प्रोटेक्शन when you feel unsafe. You must know the safe zones along your school,
bus routes and home. You must learn the complete address of your home, famous buildings in the area, or the people that you can safely talk to. Okay, अब इस पैराग्राफ में बेटा क्या बताया जा रहा है? इस पूरे पैराग्राफ में सेफ्टी जोन मीन्स महफूज इलाके, सेफ्टी जोन महफूज इलाके या महफूज जगह के बारे में बताया जा रहा है। वो कौन कौन सी होती हैं? स्कूल्स हो गए आपके, हमारे हो गए जहाँ हम बस रूट्स हो गए, हमारा घर हो गया, तो हम यहाँ सेफ होते हैं। और जहाँ भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी पे, किसी स्ट्रेंजर पे, तो आपने फौरन कहाँ जाना है? पब्लिक प्लेस पे भी आप रुक सकते हो, जहाँ ज्यादा क्राउड हो, ज्यादा लोग हो। ओके, हमेशा जो स्ट्रेंजर्स हैं वो आपको ट्रैप करने की कोशिश तब करेंगे जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होगा, आप अकेले होंगे। तो केयर किया करें कि आपने ज्यादातर अगर जाना है, कोई भी ट्रेवल करना है, तो आपने पब्लिक प्लेस को ही चूज करना है। ओके, be alert to your surroundings and always be safe. Stay in a safe zone and never discuss personal information with a stranger. Your home is a safe place and you should never invite strangers in. अब आपने क्या करना है? सबसे अहम और महफूज जगह आपका घर है। समटाइम बेटा ऐसा भी होता है कि घर वाले बड़े जो है वो घर में नहीं है और आप घर में अकेले हैं और आपने लॉक लगाया हुआ है, तो जब कोई नॉक करे तो पूछना है, अगर कोई स्ट्रेंजर है, अजनबी है, तो कभी भी उसे घर लेके नहीं आना। आप उसे नहीं जानते, कभी घर लेके नहीं आना। ओके, फौरन खुद को सेव करना है और अलर्ट रहना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आए। ऑल चिल्ड्रन लव प्रेजेंट्स एंड चॉकलेट्स बट यू शुड नेवर टेक देम फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। व्हेन आंसरिंग द फोन कॉल ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट यू से टू कॉलर। इफ यू डू हियर अ नॉक during the night or daytime, don't invite strangers inside no matter what they say. Be friends with your parents and tell them about your daily activities at school and outside. The earlier you learn these rules, the safe you are. Yes, आप इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? ये पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जब कोई भी नॉक करके आप अंदर आने की कोशिश करें, मोस्टली बेटा जज्बाती उसमें बहकाते हैं कि हम भूखे हैं, हमें ये चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, तो हमें बैठ के खाना खाने दें, हमें घर आने दें, हम थक गए हैं। तो इस टाइप के जो है ना एक्सक्यूजेस बताते हैं। तो कुछ भी कह दे वो, कोई भी अजनबी, अगर आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स आपके बड़े घर नहीं हैं, तो आप उनको इनवाइट नहीं करेंगे, आप उन्हें नहीं बुलाएंगे। या आपने फिक्स कर ले अपने माइंड में, जितना जल्दी ये चीजें आप अपने माइंड में फिक्स करेंगे उतना ही आप महफूज रहेंगे। ओके, सो कीप रिमेंबर। Next paragraph. The most common category of strangers is beggars. We find many addicts in the form of beggars lying on footpaths, railways, and bus stations. They ask people, especially females and children, for money. We should give charity to the needy and poor people. Okay? जो सबसे बड़ी कैटेगरी आजकल आती है, आप भी फेस करते होंगे, बैगर्स की आती है। अगर आप किसी बस स्टॉप पे हैं, किसी रेलवे स्टेशन पे हैं, आपको बैगर्स नजर आएंगे। दे बेग मनी। ओके, ये एडिक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट उसमें एक्टिविटीज में ये शामिल होते हैं और बुरी आदतें इनको लगी हुई होती हैं, तो उसके लिए ये हमेशा पैसे मांगते हैं। और ज्यादातर इनका फोकस मेल हजरात से नहीं मांगते ये, क्योंकि वो उनको पता है कि वो उनको एक अच्छा खासा लेक्चर झाड़ देंगे। बट ये किससे ज्यादा डिपेंड करते हैं? औरतों पे और बच्चों पे, क्योंकि उनको पता है कि सॉफ्ट हार्ट होता है इनका, तो ये दे देंगे। तो केयरफुल रहा करें। हमेशा हमने अपने सदकात और खैरात किसको देनी है? पुअर और नीडी पीपल, जो जरूरत रखते हैं लेकिन वो मांगते नहीं है। ये माइंड में रखिए, गरीब लोग और जरूरतमंद लोग कभी भी बेग नहीं करेंगे, बेगर्स नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 117। Take care of yourself and your friends. Try to be alert to the things happening around you. When you sense something is not right, be confident in yourself and be strong enough to seek help when needed. You need to learn life skills and know how to react properly in such situation and what to do if somebody offends you. Okay, so keeping these guidelines in your mind may help you stay safe from strangers. So this was the last paragraph, and इस last paragraph में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। अगर हम कभी भी ऐसी सिचुएशन फील करें तो हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नहीं, घबरा नहीं जाना कि ये स्ट्रेंजर हमें कोई नुकसान पहुंचा देगा, ये अजनबी जो भी है, जो भी आपको मिला, जिस सिचुएशन में भी आप हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंट रखना है, पूरे दिमाग रहना है, फिर उसके मुताबिक कोई स्टेप उठाना है। ओके, जितना जल्दी ये चीजें आप सीख लेंगे ये उतना ही आपके लिए फायदेमंद होंगी। और बेटा ये लाइफ स्किल्स है, बुक्स हम पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये लाइफ स्किल्स हैं कि हमने अगर अपनी सोशल कम्युनिटी में मूव करना है तो हमें किन किन चीज़ों का और कौन कौन से रूल्स हैं जो हमने
ख्याल रखने हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। ओके, तो ये सारे इस चैप्टर में जो चीज़ें भी बताई गई हैं, जो रूल्स बताए गए हैं आपको अपने महफूज करने के लिए, तो उन सबको आपने माइंड में फिक्स करना है और उनको फॉलो करना है। ओके, और इस तरह हम खुद को सेफ रख सकते हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस लेक्चर, सो टुमारो विद आवर लेक्चर नंबर 1. See you soon tomorrow inshallah. Till that, stay blessed. Allah Hafiz. Thank you so much.